सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 25 फरवरी के एक्सप्रेस एनालिसिस में। पहली खबर आती है, यूएस जॉइंस रशिया टू वोट अगेंस्ट यूएन रेजोल्यूशन ऑन यूक्रेन वॉर, इंडिया एंड चाइना एब्सटेन्स। यूएन passes resolution 93 in favor, 18 against, 62 abstain, rejects US resolution. For the first time since Russia invaded Ukraine 3 years ago, the US voted with Russia in an attempt to block a draft resolution by Ukraine at the UN. UN में resolution लाया गया calling de-escalation and early cessation of hostilities and a peace resolution of war. The resolution was passed with Europeans and G7 voting in favor of the draft resolution. India abstained along with China, one of Russia's closest allies. इंडिया वोटिंग से पीछे रहा। अगली खबर आती है, टनल एक बहुत दुर्घटना हुई है। टनल में लोग फंसे हुए हैं, उनकी यहाँ तक मृत्यु होने की बात भी तय हो रही है तेलंगाना में। पानी के भर जाने से उनको निकालने में रेस्क्यू ऑप्स में और समस्या आ रही है। CAG flags dodgy pollution notice, faulty air monitors, parking funds. Air quality monitoring stations located near trees and roads which possibly skews readings. एक बहुत बड़ी बात निकाली है, बहुत बढ़िया बात रिसर्च में। बहुत से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का जब एक सर्वे करा गया तो उन्होंने एक चीज़ पाई कि छत पे जनरली इक्विपमेंट्स लगे होते हैं एयर क्वालिटी वगैरह मेजर करने के लिए, ठीक है। तो क्या चालाकी करी जा रही है कि उनके आसपास है तो वाटर स्प्रिंकलर्स ऑन कर दिए हैं, जो वाटर स्प्रिंकल करते रहते हैं, आसपास की एयर साफ होती रहती है। या वो ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे पेड़ वेड़ पास में है, तो हमेशा वो रीडिंग पॉजिटिव ही दिखाते हैं। ये धांधली हो रही है पॉल्यूशन की रीडिंग्स में। और जो पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट गाड़ी का होता है PUCC, उसके बारे में भी कहा गया कि फर्जी तरीके से उनको जारी करा जा रहा है, जो कि दुखद है। गवर्नेंस में कमी है। द न्यू राइट, liberal values of West are being challenged at source. A response can only come from understanding, not a denigration. The institutions and values formed up in Europe and the US, the West, in last decade 20th century, are facing crucial moment of reckoning. Western liberalism and much touted rules-based order, championed by Washington and Brussels, arguably reached their pinnacle after the G7 was expanded to include Russia in 1998. The end of history moment, though, now seems a thing of the past. The economic vision articulated as the Washington Consensus, with focus on free markets, trade liberalization, fiscal discipline, began eroding with the 2008 financial crisis and the rise of China. It is now being challenged by Trump in the very place of its origin. It can be said to be framed by recent political events. अब देखिए वही सब बात है जो वेस्टर्न लिबरलिज्म था, फ्री मार्केट्स, ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल ग्रुप्स में रशिया को भी ऐड कर देना G7 में, ये अपने आप में फेड होता जा रहा है। और कहीं नहीं, खुद यूएस में अब लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी की जगह स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई जा रही हैं। It can be said that, to be framed by recent political events, the election result in Germany and the speeches by Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the Conservative Political Action Conference in the US by US JD Vance at Munich Security Conference. rather than ignore ऐसे आजकल जो इवेंट्स मेन फोकस में रहे, एक तो आपका म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जर्मनी में इलेक्शंस हुए हैं, उसके बाद रूस यूक्रेन वॉर में जो यूएस ने मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रखा है, और इसके बाद जो यूएस में इकोनॉमिकल रिफॉर्म चल रहे हैं, ये सब इवेंट्स अपने आप में एक चैलेंज है ग्लोबल डिप्लोमेसी के लिए कि जो पुराने से चले आ रहे नियम थे, तरीके थे, वेज थे, वो अब बदल रहे हैं। Even as he bore full responsibility for the poor showing of social SDP, German Chancellor Olaf Scholz rejected the possibility of even speaking to the AfD Germany far-right outfit. Riding on an anti-immigrant campaign is now the second largest party in legislature. The upward climb of AfD is of peace with the rise of many of the parties one thought to be on the fringe. The question though is why
Conservative leaders like Meloni have an explanation. It would not to be merely dismissed, it is self serving. While liberal leaders like Bill Clinton and Tony Blair were hailed as statesmen when they worked together, she says when Trump, Meloni, Modi talk, they are called threat to democracy. This is left double standard. But we are used to it, and the good news people do no longer believe in the lies despite all the mud they throw at us. बहुत ही strong speech दी थी Meloni, Italian Prime Minister ने. There are now ascendant political parties across Europe and beyond that will echo Meloni and Vance. This despondency shown by Scholz and the basket of deplorables view of those who voted the right, however, is myopic and self defeating. It's important to acknowledge that once formidable consensus is under siege and that there are several complexities in separate breakdown, it is vital to recognize that the challenger also contains multitudes. There is no singular right wing. Abortion and gun control might be divisive issues in the US, for instance, but they are not major feature of political conversation in right in India. चेंज तो बहुत चीज़ें हो रही हैं लगातार. The three low hanging reforms. CMs can help raise numbers of high wage employers by digitization, discrimination, and rationalization. Decriminalization. History suggests that there are no poor people, only people in poor places. Your wages depend on where you live, where you work. CMs have their plates full of capacity building, healthcare, institutional reforms. These take years, legislative or a flick up and reforms, so to 1 lakh plus compliance, filings of jail, provisions, etc. Decriminalization. 80% of India's 26,134 employer jail provisions can be removed by CMs. For instance, the innovative Jan Vishwas bill delivered meager outcomes. Only 110 of 5239 central employer jail provisions were removed because of vested interest as status quo bias and bureaucratic incentive for no punishment for doing nothing, but hounding for something going wrong. Courts no longer distinguish between fraud, incompetence, bad luck, and bad judgment. CM should adopt a reversing the gaze philosophy which mandates the removal of all criminal provisions except for the three criteria: physical harm to individuals, intentional and fraud against any stakeholder, societal externalities, and so significant that the violator cannot provide adequate compensation, such as issue related to public order, national integrity, or trust in property rights. There should be no jail provision in general clauses that don't specify a crime or define it too broadly, as well as in the senses of delay or inaccuracies in filings. मतलब देखिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी जेल भेजना बेकार है. इससे आप जेल तो भर ही रहे हैं. दूसरी बात है, समाज में उस व्यक्ति की तरफ एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर रहे हैं. Digitization. 65% of India's 69,233 employer compliances can be made paperless, presenceless, and cashless by CMs. India's unique digital public infrastructure's DPI framework was delivered vaccine certificates, highway tolls, duplicated welfare records, and payments. Using the DPI framework for compliance got a boost with recent announcements on PAN 2.0 and Entity Logger. ये भी कर सकते हैं, पब्लिक इंफ्रा को और डिजिटाइज करके चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं. CM should implement state employer compliance grid, replicating the non-profit open architecture technology layer of DPI to facilitate filing periodic returns and issuing licenses, registrations, permissions, NOCs and consent orders. मतलब बिजनेस को बूस्ट भी करना है ना स्टेट को, तो जो हेडेक हो जाता है एक व्यक्ति के लिए वो ख़त्म करके डिजिटाइज करना चाहिए और वन स्टॉप करना चाहिए. DPI फ्रेमवर्क का बेहतर इस्तेमाल तभी हो पाएगा. और रैशनलाइजेशन. The Patel steel frame, the civil service has become a steel cage when India's needs are shifting from integration and stabilization to accountability and growth. Many 20 million civil servants of state governments inhabit toxic thought worlds where things are prohibited till permitted and people are guilty till innocent. और जो ब्यूरोक्रेटिक बहुत बड़ा एक नेगेटिव आइडियोलॉजी है उनकी, वो इस ग्रोइंग नेशन में ग्रोथ का बाधक है. Civil service reform is complex, so tighter structures are the best place to start. Japan, UK, and US have only 15, 20 to 25 cabinet members, respectively. My guess estimate of government departments is 72, in UP 63, in Uttarakhand 54, etc. This is a big state disease. Maharashtra 35, Andhra Pradesh has
31. The philosopher Karl Polanyi argued that all economic systems are reshaped by society, culture, and politics, and suggested that well functioning labor, product, and capital market are hardly inevitable. PM Modi suggestion that 29 chief ministers matter more than one prime minister reinforces Polanyi's thesis. और देखिए हर किसी को काम करना है, हर किसी को अपने स्टेट के लिए काम करना चाहिए. India's problem of employed poverty arises from too many people working on farms, too many self-employed people, too few cities with 2 to 4 million people, too few मेगा सिटीज़. मतलब या तो बहुत लोग अधिक से अधिक खेतों में काम कर रहे हैं, महानगर कम है इसलिए रोजगार के अवसर भी कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, इसलिए बहुत कम वेजेस में काम कर रहे हैं. Too few people working in factories and too few non-farm employers with the productivity to pay higher wages. The best advice for ambitious CMs aiming to deliver the greatest transformation of mass prosperity comes from Nobel Prize winning economist Daniel Kahneman. We instinctively step on the accelerator to go faster, but yet get better results by taking out a foot of the brake. तो ये कुछ तरीके जैसे स्टेट्स को भी और बेहतर करके डिकमलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, डिजिटाइजेशन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हम बूस्ट कर सकते हैं इकोनॉमी को. आगे देखते हैं. ये जर्मनी के इलेक्शंस को लेके अपडेट है, आपके लिए काम का नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, अगर आपको बस नॉलेज के लिए पढ़ना है, क्योंकि जर्मनी से अभी आपका इलेक्शन से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है. पेरेंट्स फेवरेट स्टडी चाइल्ड फाइंड्स पेरेंट्स हैव अ फेवरेट चाइल्ड फाइंड्स लार्ज स्टडी. एक अध्ययन के बारे में जिक्र करा गया है. दे मे नॉट एडमिट बट पेरेंट्स रियली डू हैव अ फेवरेट चाइल्ड. उनका पसंदीदा बच्चा होता है. They treat some children more favorably based on things such as gender, birth order and temperament. इस अध्ययन करेगी साइकोलॉजिकली तो ये पाया गया है. The findings, the researchers have found that parents in their dataset tended to favor daughters, although same may not be true in all cultures. Jensen told the Post there are a couple of older studies that suggested that fathers are going to favor sons and mothers are going to favor daughters. So that's what we were expecting to find. But it turns out fathers favor daughters too. The new study also revealed that older siblings are favored. Older siblings were given more freedom and more autonomy. Even as adults, parents still give more freedom to older kids. कई कई बातें निकल के आई हैं, बड़े बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं पेरेंट्स. Significance caveats. Previous studies have shown that children who are less favored tend to have poorer life outcomes. और जिन बच्चों को थोड़ा सा निगलेक्ट करा जाता है हल्का सा, उनका थोड़ा नेगेटिव ही रहता है ग्रोथ. They are more likely to be depressed or anxious and may get in trouble at school, etc. Researchers hope that their findings will be valuable to the therapists, social workers, or clinicians who support families and help parents reflect on how they interact with the children, Jensen told. बहुत ही बढ़िया अध्ययन. बाकी अगला आर्टिकल यहाँ फर्टिलाइजर्स को लेकर है. Capping or reducing the consumption of urea, DAP and muriate of potash has become a strategic imperative of sorts for India. फर्टिलाइजर्स को लेके यहाँ पे आर्टिकल बहुत बढ़िया दे रखा है. फिलहाल इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं. अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ. थैंक यू.